हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और गाइस, आज हम लोग आ गए हैं मुफ्ती मैंक, जो कि है बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर, उनका लेक्चर सुनने के लिए एक्सपो पार्क दो कतर एक्सपो में। तो गाइस, तो हम इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो हम उनके प्रोग्राम लेक्चर से के जो है 3 घंटे पहले ही आ गए थे। और यहाँ पे जो है ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, बाद में जो है पूरा बाहर रोड तक भर जाता है पूरा एरिया, सिर्फ इनके नशीद बोल रहा हूँ, इनके लेक्चर सुनने के लिए। ये देखो, 2 घंटे पहले ही जो है ये धीरे धीरे भरना चालू हो चुका है। लोग आए आज मुफ्ती बैंक के आर्ट ऑफ गोवा में। देखिए कितनी पब्लिक है। लास्ट तक है। May Allah make us amongst the people of Jannah. Say Ameen. It is my pleasure to welcome you all tonight to this special Ramadan gathering with Sheikh Mufti Menk, which I'm sure many of you have been eagerly awaiting and anticipating. At the month of freeing our souls from our desires, we need to know deeply how to enjoy this kind of worship. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. This evening we will be talking about the art of dua or supplication, and I just want to share something with you that is amazing. As I was coming in, one of the du'as that I had to make was Allahumma hawalayna wa la alayna. I had to say, oh Allah, the rain that is coming, let it be around us and not upon us. It's a sunnah dua of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah it starts pouring by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. My brothers and sisters, Allah Almighty created us in a unique way. It is something that really is worth pondering over. I always say none of us are here as a result of us wanting to be here on earth, but rather we were placed here without us having a say in whether or not we wanted to come onto the earth in the first place. And for this reason we know that there is a supreme power and deity that definitely is in control. May Allah Almighty have mercy on us. Similarly, none of us will leave because we want to leave, but rather the Almighty will decide when to take us away. So He put us here without asking us, and He will take us away without asking us. In the process, Allah Almighty has made life such that it's filled with tests and challenges. If we did not have tests and challenges, we wouldn't find or feel the need to call out to Him, to cry to Him, to raise our hands to Him, to ask Him, and to continue asking Him. But He wanted us to pray for others. The angels are saying, oh Allah, give this person some love. Or at times, give this person, the way I'm showing you now, you raise your hands and you're begging to Allah subhanahu wa ta'ala. And you're asking Him with humility, with humbleness. In the process, you need to ensure that you haven't harmed other people. Many times we call out to Allah to block the prayer. Number one is when we harm other people, hurt other people, or we've usurped something from them, deceived them, and so on. Perhaps it may be a block between us and the dua. They may have cursed us, they may have harmed us, meaning they may have done something in return. By calling change, look at the help of Allah that will descend upon us as a ummah. May Allah grant it to us. Ameen. My brothers and sisters, so it is a month of supplication because Aisha radiallahu anha asks the Prophet, peace be upon him, O Messenger, peace be upon him, if I witness the night of decree, which is Laylatul Qadr, if I witness the night of decree, she didn't say, how should I pray? She said, what should I say? Right? He says, say Allahumma. Imagine if I was the one cleaning the streets. You won't be. Do you know that? Allah's going to bless you in an even bigger way. You need to show kindness and Allah will be.
And as I conclude this event today, many of you have come to know Mufti Menk as an amazing Islamic lecturer online or through his funny jokes, through video clips on social media, but he also has one hidden talent that you may not know. I've had the privilege of meeting Mufti Menk twice now, once in Malaysia almost 10 years ago, and also a few weeks ago in Makkah. And both times, mashallah, he has taught me a masterful class in how to take the perfect selfie. So, inshallah, if he agrees, I think it'd be appropriate for us to take a selfie with the crowd here tonight as we conclude. वीडियो इस चीज़ पे मैं ख़त्म करूँगा। अभी तो हो गया प्रोग्राम, देख सकते हैं आप लोग। वीडियो प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले जब मुफ्ती साहब ने एंट्री की, उस टाइम पे बारिश हो रही थी, तकरीबन बहुत बारिश हो रही थी, और उन्होंने आते ही अल्लाह ताला से दुआ की है। देखो क्या इस सराउंड में बारिश ना हो, इसके अराउंड में बारिश हो जाए ताकि हमारी महफिल बनी रहे। और उसी 2 मिनट में बारिश एकदम से रुक गई है। मतलब ये पावर आप बिलीव नहीं कर सकते, पावर है ये, लिटरली मेरे तो समझ के बाहर है। ये जो दुआ उन्होंने जैसे आते ही हाथ उठा के दुआ की माशाल्लाह से, और ये कबूल हो गई अल्लाह की तरफ से। मतलब ये डायरेक्ट कनेक्शन है भाई, कुछ भी नहीं है। इनका दिल कितना साफ़ है, और इन्होंने हमारे लिए भी बहुत सारी दुआएं की। हमारे इस लेक्चर के दौरान हमारे लिए दुआ की, और गाज़ा के लिए दुआ की, हम उम्मत के दुआ की, बहुत सारी दुआएं की। अल्लाह ताला सारी दुआ इनकी कबूल करे, आमीन सुमा आमीन। क्या भाई, ऐसा लग रहा है कि हमारा बॉडी का फैक्ट्री रीसेट हो गया है। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी हिदायत दे इनकी तरह, और बहुत अच्छी बातें बोली इन्होंने माशाल्लाह से। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू बाय वेरी बाय। मच। توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبير.